Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई और MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर दबा और चैनल को सब्सक्राइब कर दबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर दबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पाई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे आमे किछिटा प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस करिबा बेस्ड ऑन द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज on dot and cross product. So first example रे कहूची गोटे वेक्टर देला e equal to 2i plus 3j minus 4k आ गोटे वेक्टर b equal to 5i plus 2j plus 4k so that they are perpendicular to each other. So यदि perpendicular कहूची ता माने ए दुई वेक्टर भितरे एंगल हेबा कथा 90 डिग्री. So आमे कोन करिबा इथिरे डॉट प्रोडक्ट जदि बाहर कर देला आउ ताकू जदि equal to 0 आमे प्रूव कर देला such that a is not equal to 0 and b is also not equal to 0 ताले obviously a dot b रो वैल्यू केते हुए a b cos theta so cos theta will be 0 or theta will be 90 degree that's why हमें a dot b बाहर करिबा ओके कंपोनेंट वाइज याको हमें ई फॉर्मेट रे लिखि परिबा ताले देखो चेक करो आसी जीवो 0 hence the two vectors will be perpendicular to each other moving on if the magnitude of a plus b is equal to a minus b then prove that they are perpendicular to each other okay so आमे एथिरे कोन करिबा दुई वैल्यू को एका संगे लिखिबा LHS और RHS को मैग्नीट्यूड जेतु देइछि आमे तार वैल्यू को लिखि देला स्क्वायर रूट करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab cos थीटा राइट ताले एबे देखो एथिरे a स्क्वायर b स्क्वायर दुई साइड रे सेम अछि कटि जिवो सो फाइनली पाइबो 4ab cos theta equal to 0 4ab जोटा हैला एटा केबे भी 0 हे परिबोनी सो cos theta ही ultimately 0 होबो and theta will be equal to 90 degree and hence the two vectors will be perpendicular. Next problem, find the value of c ए बड़ा प्रॉब्लम बहुत आसे गोटे कांस्टेंट दे देबो c अननोन कांस्टेंट तार वैल्यू बाहर करो such that this vector containing this c will be perpendicular to another vector b सेम वे रे हमें a डॉट b बाहर करिबा ओके कंपोनेंट वाइज ताले अननोन कोएफिशिएंट देखिबो आसीबो इक्वल टू 3 नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट 4 -3 -5 मीटर टू पॉइंट -143 मीटर अंडर द फोर्स F equal to -3i -j plus 2k Newton. Then find the work done by the force. Work done कहला हमें जानिछु it is equal to F dot S. Okay. So हमें फर्स्ट ए दुई जो पॉइंट देला एथिरु डिस्प्लेसमेंट बाहर करिबा केमती देखो एथिरे हमें फाइनल पॉइंट को नेबा ताकू रेस्पेक्टिवली काटिबा इनिशियल पॉइंट रु सो फाइनल पॉइंट रे x कोऑर्डिनेट हला -1 इनिशियल पॉइंट रे 4 so -1 -4 I cap similarly 4 -3 that is 4 plus 3 j cap 3 minus 5 3 plus 5 k cap so eta asibela amro displacement vector tale work done is F dot r so dot product kar dele it will be 24 joule okay remember work is a scalar quantity. Now next problem, two constant forces are given here right they act together on a particle which is displaced from the point 2i plus 4k to the point 20i plus 17j minus 3k. Find again the work done by the forces. Okay, एथिरे दुईटा फोर्स देइछि सो हमें अगेन जानिछु वर्क डन रो फार्मूला हला F डॉट S. ओके सो एथि जेतु दुईटा फोर्स देइछि हमको नेट फोर्स F1 प्लस F2 करबा पई पड़िबो दुईटा को ऐड करले हमें पाइबा 5i plus 3j plus k. तापरे डिस्प्लेसमेंट कथा जो आसिला सिमिलरली फाइनल रो इनिशियल को काटिबा okay so this is the ultimately final displacement then we can do the dot product so work done will be 32 units
ओके जेहेतु एथिरे किछि भी यूनिट देइनी तेणु आमे जूल हेबो ना कोन हेबो एटा तो आमे जानि पारबेनी सो वी कैन राइट 32 यूनिट्स ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दुईटा वेक्टर भितर एंगल बाहर करबा माने आमे कोन करबा cos थीटा बाहर कर देबा which is equal to a dot b by ab so ए दुई वेक्टर दे देउची तार डॉट प्रोडक्ट को आमे ऊपर एमती लिखिला राइट देन यार मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देला सो cos theta रो वैल्यू फाइनली आसीबो 3 by square root of 21 and theta will be cos inverse 3 by square root of 21 एतिकी रे लिखि देले भी चलिबो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन रे हुए तो कैलकुलेटर अलाउ करा जाई नथिबो ओके सो cos inverse एतिकी लिखि देले भी you will get full marks moving on to the next problem गोटे वेक्टर दुईटा देउछि एथिरे a आउ b find the projection of a along b and the projection of b along a देखो projection of a along b कहले आमे एठी बुझिबा a dot b by b ओके बिकॉज a dot b रो वैल्यू केते हुए a b cos theta by b कर देले एठी आसी जिवो a cos theta so this projection of a along b is nothing but a cos theta right so यार वैल्यू आसी गला 4/7 सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ b along a कहले हमें बुझिबा b cos theta okay so a dot b by a करिकी we'll get 4/3 right moving on दुईटा वेक्टर दोउची अगेन a और b right what is the projection of a cross b parallel to 5i minus k प्रथमे हमें a cross b बाहर करिबा डिटरमिनेंट वे रे i j k then components of a components of b finally आसीबो चेक करिवो I plus 5j plus 7k ओके सपोज a क्रॉस b को हम लिखला एज ए न्यू वेक्टर c ताले ये पचारची a क्रॉस b बा c रो जो प्रोजेक्शन अछि ओके प्रोजेक्शन पैरेलल टू 5i minus k ओके पैरेलल टू माने अलोंग 5i minus k भी हम लिखि परिबा सो दुईटा को हम डॉट प्रोडक्ट कर देबा डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर माने एई वेक्टर रो यूनिट वेक्टर सहित हमें डॉट प्रोडक्ट करला so we are getting minus 2 by square root of 26 which is the required answer next problem find the unit vector perpendicular to each of the vectors okay किछि नै दुईटा वेक्टर दउची तारो यूनिट वेक्टर बाहर करबा को कहउची परपेंडिकुलर जेमति कि दुई वेक्टर सहित रहइबो ठीक अछि ताले बोथ वेक्टर सहित परपेंडिकुलर कहले हमें बुझिबा कोन a क्रॉस b ही हुए ओके सो a क्रॉस b हमें बाहर करिकी तार मैग्नीट्यूड को यदि डिवाइड कर देला दिस विल गिव यू द यूनिट वेक्टर व्हिच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b सो a क्रॉस b फर्स्ट बाहर करला तापर तार मैग्नीट्यूड एंड देन वी डिवाइड इट सो दैट यूनिट वेक्टर हमरा आसी गला नेक्स्ट प्रॉब्लम जदि गोटे वेक्टर दोची b इक्वल टू c plus ma m is any scalar then show that a cross b equal to a cross c but if a cross b is equal to a cross c then b is not necessarily equal to c okay so दुईटा जिनस हमको एठी रे पचारुची ठीक अछि फर्स्ट हमें बाहर करबा जो हिसाब रे हमको गिवन डाटा देछि b equal to c plus ma ताले a cross b प्रथमे बाहर करबा ओके सो क्रॉस प्रोडक्ट करला जते बेले ताले देखो एठी a cross m a जते बेले करा जाउची एटा सेम वेक्टर सहित क्रॉस प्रोडक्ट होउची सो इट विल बी 0 फाइनली हमर रहिला आंसर a cross c ओके बिकॉज एटा नल वेक्टर दबो a cross a तापरे उल्टा जिनसडा करबा a cross b जदी होउची इक्वल टू a cross c देन हमें आर पोर्ट को नै गले a cross कॉमन नै परिबा b minus c सहित क्रॉस प्रोडक्ट करिकी एटा 0 दबो सो निहाती भाबरे या तो a रो वैल्यू 0 होबा कथा बा b minus c रो वैल्यू 0 हेबा कथा ओके सो b minus c किंतु एठी 0 हे परिबो नाही ओके then obviously we are left with the condition a equal to 0 okay and if a is not equal to 0 then b minus c equal to 0 or b is equal to c so हमको क्वेश्चन जदी कहउची b जदी not equal to c हला ताले हमको a cross b equal to a minus c जदी बाहर करा जाउची ताले a must be equal to 0 right moving on to the next problem गोटे ट्रायंगल कथा कहूची जो थरे कि vertices दे दोची a b आउ c then prove that the area of this triangle is half of
magnitude of B cross C plus C cross A plus A cross B. Okay, so suppose ame ethi origin negla ethi O, right? Let O be the origin. Then as per the problem, PR here it is equal to OR plus OP. Okay, OR epote, OP epote. It is triangle law vector addition ru आछि. So C minus B हिसाब रे हमें लिखि परिबा एथि, right? तापरे PQ होची this much, which is equal to OQ minus OP. This is OQ and this is OP, right? So it is equal to A minus B. ताले गोटे ट्रायंगल रो एरिया आमे जानिछु हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ भूमि गुणन उच्चता. सो हाफ ऑफ PR प्लस PQ, राइट? PR हे गला एठी तमरो बेस टा आउ क्रॉस प्रोडक्ट जदि करूछु आमे ताले एठी PQ, राइट? ताले ए जगह रे आमे जो वैल्यू गुडा पाइला तारो रिप्लेसमेंट करबा जदि ताले हाफ C minus B cross A minus B. Okay, याको एबे सॉल्व करी करी जिबा. Okay, याको सॉल्व करी करी जिबा. Finally we'll get the required answer, right? अच्छा, moving on to the next problem. Example number 12. एथिरे कहूची by vector method find the area of the triangle whose vertices are given as in the problem 1 0 minus 1 2 1 5 0 1 2. Okay, so as per the problem आमे कोन करिबा a b बाहर करिबा. a b बाहर करिबा माने एथिरे देखो 1 0 minus 1 अछि, b रे होछि 2 1 5. so final to initial को minus करा जाय. so 2 minus 1 will give you 1. so 1 into I, that is I cap. 1 minus 0 equal to 1 into j, that is j cap. 5 minus minus 1, that is 6 and k cap. Similarly आमे AC बाहर करि परिबा. Okay, ताले area of the triangle मने रखो, area of the triangle here half of AB into AC. Okay, एटा वेक्टर जदि हिसाब रे देछि ताले area of the triangle ए हिसाब रे बाहर करा जाय परिबो. ताले क्रॉस प्रोडक्ट आमे बाहर करिबा ए दुई वेक्टर रो. फाइनल आंसर आसीबो half of square root of 94, right? Then if A plus B plus C is equal to 0, then prove that A cross B equal to B cross C equal to C cross A. ठीक अछि. So A cross B, A plus B रो value आमे जदि बाहर करूछु, it will be equal to minus C. Okay, that means A cross A plus B will give you how much? It is minus A cross C. ओके, एबे याकू आमे टिके एबे एक्सपांड करिबा. a क्रॉस a तो निहाती भाव रे एठी 0 होबो. सो a क्रॉस b रो वैल्यू आमे 1 पाई गला एठी c क्रॉस a. गोटे पार्ट एठी आमे प्रूव कर देला. तापरे b क्रॉस a प्लस b सिमिलरली आमे बाई परिबा. अगेन एटा 0 होबो b क्रॉस b. सो b क्रॉस a इक्वल टू माइनस b क्रॉस c, और आको जदि उल्टेबा ताले माइनस सिंबल आसीबो. ताले फाइनली a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c होबो. Okay, next problem. The diagonal of a parallelogram are represented by the respective vectors. Then find its area. Okay, so एठी area गोटे जदि diagonal हमको दे दीची ताले गोटे parallelogram पई area हबो केते? It is equal to half of d1 cross d2. Okay, so d1 cross d2 बाहर करिबा, जोटा हमको diagonal दिटा देची क्रॉस प्रोडक्ट बाहर करिकी सिंपली यार मैग्नीट्यूड आमे नेबा आ ता सहित हाफ मल्टीप्लाई कर देले आसी गला 5 of root 3, right? Next problem. If a force given by minus 3I plus 2j plus 2k acts as a point or acts on a point 2I plus 3j plus k, then find the moment of the force about the origin. किसी ने मोमेंट ऑफ द फोर्स कहले हमें बुझिबा रेडियस वेक्टर सहित जेतेबेले क्रॉस प्रोडक्ट करा जाय. ओके, सो एठी रेडियस वेक्टर ए पॉइंट हिसाब रे जो कोऑर्डिनेट देला ताकू केवल क्रॉस प्रोडक्ट करिवार अछि फोर्स सहित. दिस विल गिव यू द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द ओरिजिन. नेक्स्ट प्रॉब्लम. A rigid body is rotating with angular velocity 5 radian per second
about an axis parallel to this vector through the point this. Find the magnitude of the velocity of point of rigid body at 3i plus 2j minus k. So এটি पोजिशन वेक्टर आम जब बाहर करवा देख दुईटा जो पॉइंट देला ओके गोटे पॉइंट एठी दउची 3i plus 2j minus k ओके एटा एंडिंग पॉइंट तापरे आमको स्टार्टिंग पॉइंट दउची 2i plus 2i minus j plus k. सो याकू आमे माइनस कर देले हमरो पोजीशन वेक्टर बा डिस्प्लेसमेंट आमे पाई गला. दैट मीन्स एबे एंगुलर वेलोसिटी आमे पाई परिबा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन कैप. ओमेगा रो वैल्यू एठी दी दीची 5 रेडियन पर सेकंड. ओके एटा होची मैग्नीट्यूड टा आउ एन कैप होची डायरेक्शन. डायरेक्शन कहा सहित मैच करूची जहा सहित ये पैरेलल अछि. सो से हिसाब रे वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर दबा विल गेट द डायरेक्शन दैट इज द यूनिट वेक्टर. सो फाइनली हमरो ओमेगा वेक्टर आसी गला एंगुलर वेलोसिटी एतकी. ताले लिनियर वेलोसिटी केते हबो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r. ओके सो एथिरे हमें वैल्यू पुट कला ओमेगा और r रो क्रॉस प्रोडक्ट कर देले हमें v पाई गला. ताले एई वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड टा जोटा पचारची किछि नै वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स magnitude will give you unit vector. Similarly এই ভেক্টর রে 5 by square root of 21 তো কমন जीवो. এই যেতকি क्वांटिटी अछि तारो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट रो स्क्वायर करी के हमें स्क्वायर रूट कर दबा ऐड कर देले फाइनली आंसर आसी होला 18.2 which is the required answer. Now moving on to the next problem. एथरे गुटे ट्रायंगल कथा कहूची जोथरे की वर्टिसेस दे देला a b और c. Then prove that area of this triangle is half times of magnitude of b cross c plus c cross a cross b. Remember as per the problem जो vertices दउची a b c that means एटा triangle रो sides नुह. ओके सो आमे गुटे random origin select कर देला suppose o এই पॉइंट रु आमे रेस्पेक्टिव vertices को जदी जॉइन करूछु ताहले जे कि आमे वेक्टर a b और c पाइबा. That means here the triangle is actually PQR. राइट ए जिनस बुझिला परे एबे आमे PR ट्रायंगल रो गोटे साइड को देखिबा PR which will be equal to OR minus OP. Okay so here OR and here OP. Similarly respective values put कर देला परे यार वैल्यू आसीबो C minus P. So next side होची गोटे ट्रायंगल रो एठी जो PQ. Okay it will be equal to OQ minus OP. So this is OQ and this is OP. सो यार वैल्यू आसिला a माइनस b. तापरे एबे हमें ए ट्रायंगल रो वेक्टर एरिया बाहर करिया को चेष्टा करिबा व्हिच इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. रिमेंबर एठी हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट हेबनी. ओके सो एटा हमें प्रीवियस क्लास रे पढितिला एडजेसेंट साइड्स pr और pq हमें बाहर कर दीचु. सो यार वैल्यू पुट कर देला हमें आउ फर्दर कैलकुलेशन करिया को आमे प्रोसीड कला. सो फाइनली यार वैल्यू आसीबो हाफ टाइम्स ऑफ c क्रॉस a प्लस b क्रॉस c क्रॉस a क्रॉस b. ओके सो एरिया हमरो आसी गला. एठी प्रिंटिंग मिस्टेक अछि देखो ए जगह रे. ओके एटा जो क्रॉस क्रॉस दीची ए जगह रे क्रॉस हेबनी एटा प्लस हेबो. ओके ए जगह रे प्रिंटिंग मिस्टेक अछि. सो आई विल एडिट इट. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम को एबे को बढ़िबा अगेन गोटे ट्रायंगल कथा दउची. ओके सिमिलरली वेक्टर मेथड रे बाहर करो वर्टिसेस दे देला इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स 1 0 -1 2 1 5 0 1 2. ओके सो देखो रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स को हमें एठी लोकेट कर देला. ताले एबे एडजेसेंट साइड्स पाइबा को चेष्टा करिबा a b धरा हमें बाहर करिबा. ओके b रो कोऑर्डिनेट को हमें यूज करिबा a रो कोऑर्डिनेट्स सहित एठी हमें याको काटिबा. ताले सपोज b रो x कोऑर्डिनेट होची 2 a रो x कोऑर्डिनेट हला 1. So 2 minus 1 equal to 1 into I cap. Okay तापरे y coordinate हला b रो 1 a रो हला 0 1 minus 0 equal to 1 into j cap. Similarly z coordinate 5 a रो हला minus 1 so 5 minus minus 1 that is equal to 6 times of k cap. Okay ताले a b पाई हमें वेक्टर टा पाई गला. Similarly a c भी पाई परिबा. Okay एबे हमें यूज करि परिबा हमरो
formula area of the triangle, so half times of magnitude of the cross product of the two adjacent sides AB cross AC, value asibo half times of square root of 94. Okay, next problem, jodi a plus b plus c equal to 0 hela, then prove that a cross b equal to b cross c equal to c cross a. Okay, so এতে কিছু করিবার নাহি, a plus b plus c equal to 0 ଦେଇଛି, that means a plus b equal to minus c, or ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ a cross multiply କରୁଛୁ ଲେଫ୍ଟ ଆଡ଼ୁ, ତାହେଲେ ଦେଖ याको आम ब्रैकेट खोले a क्रॉस a विल गिव यू अ नॉल वेक्टर, सो LHS होगा a क्रॉस b, आ RHS को आम एटा देखो माइनस अच्छी, सो उल्टे देले होगा c क्रॉस a, सो ये गोटे पार्ट प्रूफ होगा। आर पार्ट प्रूफ करने सिमिलरली आम लेफ्ट साइड रू b को क्रॉस प्रोडक्ट करवा। ओके, सो याको भी देखो यहाँ RHS माइनस रे अच्छी, उल्टे देवा जदि आम ताले c क्रॉस b पाइबा, किंतु ये न उल्टे कि कौन करहब, आम ये माइनस को आर पट को नहीं जावा। ओके, बिकज ये बी क्रॉस बी तो अल्टीमेटली ये नल वेक्टर दूची, बी क्रॉस ए आमको उल्टेबार अच्छी, सो ये माइनस आर पट को नहीं गले ए प्लस ए क्रॉस बी विल गिव यू इक्वल टू बी क्रॉस सी। ओके, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पैरेललोग्राम रो देखो दुईटा डायगोनल देउची, तार रिप्रेजेंटेशन कर देला, फाइंड द एरिया। ओके, सिंपल अच्छी, पैरेललोग्राम पई एरिया रो फार्मूला है हाफ टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रेस्पेक्टिव टू डायगोनल्स यार जो क्रॉस प्रोडक्ट रो। ओके, सो फास्ट आम क्रॉस प्रोडक्ट बाहर करवा, तापर एरिया रो फार्मूला वैल्यू आसीबो 5√3। ओके, देन आगको बढ़िबा, ये गोटे फोर्स दौची, फोर्स देदेला तार वैल्यू, देन इट इज एक्टिंग ऑन ए पॉइंट 2i plus 3j plus 4k, find the moment of the force about the origin। about the origin जेतेबेले कहिदेला, that means ए origin which is 0 0 0 याकू आम ए पॉइंट सहित अटैच करदेले will give you the position or the radius vector। so moment of the force रो फार्मूला है r cross f। so r पाई किछि नै, सिंपल सेही पॉइंट रही आम कोऑर्डिनेट्स यूज करिबा, क्रॉस प्रोडक्ट करिबा f सहित बा फोर्स सहित, will give you the moment of the force। then moving on, next problem, गोटे रिजिड बॉडी कथा कहूँ which is rotating with angular velocity 5 radian per second about an axis parallel to this much through the point 2i minus j plus k, find the magnitude of the velocity of the point of rigid body at a point that is 3i plus 2j minus k। so आम ये कौन करवा, ये जो पॉइंट देला रिजिड बॉडी रो याकू नहीं जावा फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट दे देला एटा, ताले ये दुईटा को फेड़ी देले आम पाइबा पोजिशन वेक्टर, राइट। तापर ये दौची एंगुलर वेलोसिटी which is 5 रेडियन पर सेकेंड, एटा मैग्नीट्यूडटा देला, तार डायरेक्शन आम पाइबा केमती, जो डायरेक्शन सहित एटा पैरेलल होइकी रोटेट करूची, सो एन कैप होगला आमर ये जो डायरेक्शन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, सो आम फाइनली यार एंगुलर वेलोसिटी पाई सारला। ओके, तापर एबे लीनियर वेलोसिटी, बिकॉज हमको क्वेश्चन रे कोन पचारुची ना फाइंड द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड पचारुची, एठी माने एटा लीनियर वेलोसिटी पचारुची। सो लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी सहित केमती रिलेटेड, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ओके, सो वी पुट द वैल्यू, आम यार वेक्टर फॉर्म टा पाइगला, सो मैग्नीट्यूड इजीली पाई परिबा, इट विल बी इक्वल टू the sum of the squares of the components and its square root। ओके, फाइनल वैल्यू आसीबो 18.2। लास्ट रे एतकी कहबी जे किछि किछि जगह रे मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक रही थाई पारे, सो तुम नजर को जदि सेही भले किछि प्रिंटिंग मिस्टेक आछी, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रेक्टिफाई दोज। ओके, थैंक यू।